everything is settled down. Only 1 hour is needed now. You have the foundation, you have the grammar, you have everything, but hesitation is preventing you from uttering your sentences. The framework is there, but you are lacking the vocabulary. I told you the very first moment that vocabulary building is the essential nitty gritty of any language. Grammar doesn't hamper you from speaking, it's the vocabulary which is keeping you at bay. तो vocabulary बहुत build matter कर रही है आपके लिए. You are really suffering the lack of vocabulary. You are going for the words, but words are not leaping into your mind. Every time you are speaking, you are translating the thoughts. That's the second hurdle. I made you aware I am not going to teach you in Hindi and then translating those sentences into English. It's not because I was pride at that moment. I was articulate at that moment, and it is impossible if you carry on those principles, if you keep sticking to those principles in your life, nothing will ever happen. Nothing will ever happen. I was quite clear thanks to my guru. He taught me those principles, and I am really faithful to him. Whatever I'm teaching, I am prescribing her preaching, his preaching, sorry. Really matters to me is that your parents are anxious. They want you to speak, not me. They want to hear you improving. They want to listen to you. But where the mistake is it my fault or your fault? You have to consider. If it's my fault, I am at blame. If it's not mine, then you have to think carefully. You have to be vigilant. मैं अगर मेरा कसूर है तो मैं दोषी हूं, पर नहीं है तो फिर आप दोषी हैं. अगर मेरी एफर्ट्स में कमी है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल. इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. You have to decide where the game is really hampered. You have to decide. I am not after money. I am not going to earn money from you. It's not my goal. My goal is to improve you so that your parents, your friends, your family, and your surroundings will become a better habitable place, a better world. You can teach what you learn, but you can't make my principle. I can't make my principle fixed in your mind. It's impossible for me. I can't give you my ears. From the very beginning I am making a single point: start listening. How many kids devoted their 30, 300 or 200 hours of time in listening? Have you spent that much time, ma'am? Nobody has spent. What can be done? From the very first day I gave you the authentic site: BBC World News, BBC Story Listening, BBC Cambridge Dictionary. Even if you left, I told you that time, ma'am, even you leave my class from the very first day, you want to quit, you can. There is no hurdle, you can still learn. My class is not mandatory for you. It's not necessary to come into my class. I am not of those masters, those teachers who really say wrong things. They are making the wrong statement again and again. If a kid come join my class for a single day, 1 day is enough. 1 day is really enough, because I am giving everything which I have gained. It will take time, but the seeds are there. Seeds are there. Never ever in my life I have cheated anyone. कभी भी धोखा नहीं दिया कि जिंदगी में, कभी भी. बच्चा दूर की बात है, किसी को भी नहीं. ठीक है. तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल गाइड लाइफ थी सर की, और हम कोशिश करते हैं कि हम प्रिंसिपल पे खड़े उतरें. जब जिंदगी में कुछ भी करें तो प्रिंसिपल लाइफ हो. बच्चे हैं तो बच्चे सीख कर जाएं. हम बहुत कोशिश रहती है, एफर्ट्स रहते हैं. आई कमिटेड ए मिस्टेक दैट आई थिंक दैट you are going to form the vocabulary, but first class taught me the lesson that nobody is putting his or her efforts in vocabulary. I started teaching vocabulary. I am putting whatever I can. I am giving everything whatever I can. बस अंडरस्टैंड करना होगा, हर किसी को करना होगा. मैं सबसे भी कभी नहीं बच्चे को टारगेट करता, कभी किसी बच्चे को नहीं कहता कि आप गलत हैं, आप सही हैं. पर इवेल्यूएट कीजिए, हर स्थिति में इवेल्यूएट कीजिए. हर स्थिति में इवेल्यूएट करना होगा आपको कि इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही. अपने आप मेरे प्रति फेथफुल रहे ना रहे, अपने आप के प्रति तो रहिए. ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने आप के प्रति फेथफुल रहे. बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है लाइफ में जब हम अपने आप से फेथ नहीं करते, अपने आप पे फेथ खत्म हो जाता है हमारा.
तो स्ट्रगलिंग फॉर वोकेबलरी कितने समय तक जारी रहेगी? कब तक स्ट्रगलिंग रहेगी वोकेबलरी के लिए? जब तक आप लिसनिंग को पार्ट नहीं बनाते, जब तक आप स्पीकिंग, जब तक आप रीडिंग को पार्ट नहीं बनाते लाइफ का, ये समस्या रहेगी। इट कैन प्रिवेल टिल डेथ बेड तक भी रह सकती है समस्या आपके साथ में। मैं नहीं कह रहा 2 महीने 3 महीने, ठीक है। हो सकता तुम लर्न ही ना करो, रोज वोकेबलरी सीखो ही ना तुम कुछ, तो जिंदगी च लास्ट जो मरोगे 14 ईयर ऑफ स्कूल, 14 साल स्कूलिंग, कितनी वोकेबलरी, हाउ मैनी वर्ड्स हैव यू गेन ड्यूरिंग दोज 14 ईयर्स which you spend at school? How many words? 300, 250 words is the failure of the school system. Schooling system failed a lot. Then the grammar, the way of teaching English, any language, translation is the wrong method, worst method. Translation is the worst method ever practiced on any land. Translation बहुत गंदा method था. I'm not going to translate anything. Whatever I'm speaking, I am clear that it is in English. No sentence is framed in my mind in Hindi or Punjabi. कोई sentence में frame नहीं होता. Yeah, I reorder the statements and I go in search of vocabulary, but as soon as I struggle. I put my efforts and I win the game. I try my best to win the game, but you are not trying. That day, ma'am used the word wrongly, interbreed, but ma'am never went for the right word. She's still unaware of the word. What's the real word? What's the right word for that interbreed? What should have been used instead of interbreed? Still, no need to go for the word. Huh? Reproduction is a way which can be interbreed, but the real word you want to say was inbreed. But you never. We are not curious kid. We are not curious kid. We want to blame others for our successes and our failures. It's a big fault. All of us are part of that tradition. We have to stop. Ash came to my class and I told him straightforwardly, a single day is enough. If you want to quit, you can. There is no need to join a single second class. क्योंकि है ही कुछ नहीं है. You can learn those principles by yourself. तुम अपने आप प्रिंसिपल को सीख सकते हो. But resources are there for free. Nobody is going to charge you for that. Now I'm coming to the today's talk. The presentation given by Hardeep ma'am. They have a feel. Books feel नहीं होंगी यहाँ. We feel something. Books feeling नहीं. They can't feel. They can't feel. Even if you are crying, they are still lying in the same way as if you are laughing. ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਹੈ. ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. Because they create the emotion, but they themselves are emotionless. They create the emotion within us. ठीक है? They feel us isolated. We feel isolated. We feel isolated. Instead of saying they feel us isolated, no, we feel isolated. In the absence of book, in the death of books, we feel isolated. Isolate ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਅਸੀਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੱਲਾ ਛੱਡਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਗਏ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਐਰਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਦਾ ਹੋਊਗਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਲੌਸ ਇਨ ਦੈਮ creativity and imagination. Afterwards, you came to describe Harry Potter, magician, magic skills, but beyond that, they sorcery. Jadoo tona bhi hai. The huge chunk of Harry Potter is dedicated to both those two aspects. Jadoo tona bhi hai te magic bhi hai. Sorcery गायब हो गया अपने जो. Sorcery में आंदा सी, की आंदा सीगा? सॉसरी जादू टोना ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, SORCERY ਸੌਸਰੀ. ठीक है, हैंड बुक्स आ गया. हैंड बुक्स, हाँ, हैंड बैग carrying the hand books, they are we can carry them easily. Instead of that, you can say portable.
portable word. You are, instead of saying those many words, because words are like jewels, ਜਿਹੜੇ words ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੀਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, use them as sparingly as you can, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ. That's the art, that's the creativity. But meander a lot and say very little is the folly. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵਰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਘੱਟ ਵਰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? vocabulary. Here comes the vocabulary. Grammar and vocabulary entwined together and we can't segregate them. ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ. ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, for fun ਆ ਗਿਆ, the whole story revolves around Rachel. revolve ਜੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਸੀ. ਰਿਵੋਲਵ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਏ ਗਰਲ ਨੇਮਡ ਰੈਚਲ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਕਰਤਾ? ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਤਾ. ਲੈਕਸੀਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ. ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲੈਕਸੀਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਿਵੋਲਵ, ਪਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੋਂ. ਅਗੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ. ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀ. ਕੀ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਵਰਸਡ, ਹੂ ਗॉट ਡਾਈਵਰਸਡ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਈਵਰਸੀ. ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਡਾਈਵਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. ਐਲਕਲਿਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਅ ਲੋਟ ਹੈਵੀਲੀ, ਤਾਂ ਐਲਕਲਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਲਕਲਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਕੋਹਲ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ. ਕਿਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਐਲਕੋਹਲ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਹੌਲਿਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਕਹੌਲਿਕ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਰਕਹੌਲਿਕ ਹੁੰਦਾ. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਵਰਕਹੌਲਿਕ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੁੰਦਾ. ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਵਰਡ ਆਏ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਵਰਕਹੌਲਿਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ deteriorates, but the condition deteriorates as days passed by, yeah, every passing day made the situation worse. ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵਰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ. I forgot the line because within the time frame you are leaping from one sentence to another, it's impossible for me to write down every sentence uttered by you. You know that my memory is not good. ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤਾਂ ਹਿਪੋਕੈਂਪਲ ਰੀਜਨ ਮੇਰਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਥੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਕੇਮ ਵਾਸ ਬਾਈ ਐਵਰੀ ਪਾਸਿੰਗ ਡੇ. ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ. ਪਰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ. ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਲੈਕਸੀਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ. ਅਗੇਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਮ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਆ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਲੇਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, LIE ਲਾਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ. ਲਾਈ ਵਰਡ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵਰਡ. ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਡਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਥੋਟ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਈਏ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਰਡ ਹੈ. ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਔਖਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਕੀ ਹੈ? ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ. ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਨਵੈਂਟਡ ਏ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਹਰ ਲਾਈਜ਼, ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸ਼ੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ. ਛੋਟਾ ਵਰਡ ਹੈ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਔਖਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਗਾ.
हाँ तुसीं पढ़े नहीं होना, लिसनिंग और रीडिंग थोड़ी घट रही होनी है, मेरी थोड़ी ज़्यादा रही होनी है, तुसीं 5 किताब पढ़ी होनी, 2 वध पढ़ ली होनी, ठीक है। फिर तुसीं कैथी फ्रेंड कोले चले गए, इत्थे शेयरिंग हर हाउस किते नहीं आया, इत्थे होना चाहिए शेयर्ड हर हाउस, शेयर किया उन्हें हाउस, वो घरे जाके रही। बट आप बहुत वर्ड यूज करते थे, कंज्यूम करते बहुत सारे डायमंड वही सट्टते, एक सिंपल वर्ड नाल काम चल जाता है। शी शेयर्ड हर हाउस, ड्यूरेशन ही दस, ऐसे सेंटेंस ड्यूरेशन ही पा सकते थे, फॉर हाउ लॉन्ग तुम ड्यूरेशन ही पा सकते, किन्ने देर वास्ते रही उत्थे, मैनू नहीं पता, मैं नहीं पढ़ी गई स्टोरी, ठीक है। मैनू टाइम होर कम्मां ते मिले तो मैं पढ़ा, नॉवल भी पढ़ा, ठीक है। उस बाद रेचल ब्यूटीफुल कपल, कपल जो आ गया तो उदों हसबैंड वाइफ कहने की लोड़ नहीं पैंदी, जो कपल आ जाता है, अगर कपल है तो हसबैंड वाइफ ही है। अगर 2 फ्रेंड है, एक कुड़ी है तो एक ओदी फ्रेंड, मुंडा ओदा फ्रेंड है, फिर कपल नहीं गा, फिर वो कपल नहीं गा, ठीक है। हाँ हाँ वो किता, मैं नहीं कह रहा, मैं थोड़ा आई नहीं कह रहा गलत किया सही किया, मैं नहीं कह रहा, विद इन योर कंटेक्स्ट थिंग्स मे बी राइट, it may be appropriate in your context, but I am talking in a general way while I am introducing the concept to the class. I am making each and every concept clear within every kid. मैं कह रहा है कि अगर तुम कपल यूज कर लो तो फिर तुम elongate ना करो हस्बैंड ते वाइफ ते होने, फिर जरूरत नहीं पैंदी, कपल आपे आ जाता हस्बैंड ते वाइफ, ठीक है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਰਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾਊਨ ਹੇਅਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਿਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਠਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ, ठीक है, धोखा देंदी है, बिट्रे करती है, या लॉयल है, फेथफुल है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, yesterday you committed a mistake, extra marital affair is a word which can be used only once, then you have to switch another related word to another related words, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਕਹਤਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲॉयल है या डिसलॉयल है, किसी नाल भी, मैं आई एम नॉट टेकिंग ए सिंगल, अगर ए पार्टनर इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर शादी तो बाहर भी संबंध है तो लॉयल है कि डिसलॉयल है, डिसलॉयल है। फेथफुल है कि अनफेथफुल है, बिट्रे कर रहे कि नहीं कर रहे, धोखा दे रहा, बिट्रे का मतलब धोखा देना होता है, कर रहा धोखा, अपने वर्ड आ जाते हैं, कुछ वर्ड आप यूज कर सकते हैं अपने को वोकैबुलरी रेंज एक ही बनाने अपनी वोकैबुलरी, आप हर बार कल 3 वारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यूज कर लिया सीगा वर्ड, ठीक है। तो ये थां आप कुछ वर्ड होर भी पा सकते हैं, बिट्रे कर रहा है, चीट कर रहा है, डिसलॉयल है, अनफेथफुल है, ट्रीजन कर रहा है, इनफिडेलिटी शो कर रहा है, की शो कर रहा है, इनफिडेलिटी शो कर रहा है, ये अपनी की वेरिएशन, लैक्सिकल वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्पीच, कोई भी स्पीच में लैक्सिकल वेरिएशन बहुत मैटर करते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स छुप जाती हैं लैक्सिकल वेरिएशन के पिछे, कि लैक्सिकल वेरिएशन के पिछे। अज मेरा कंसनट्रेशन थोड़े नाल ज़्यादा रहूगा, कल भी शायद तुसीं सोमवार ना आओगे, सोम मंगल आओगे तो मेरा ज़्यादा ध्यान थोड़े ते रहूगा, आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिपार्ट, आवर फेट इज जस्ट टिल दैट पॉइंट, उस तक है, पर मैं कोशिश फिर भी करांगे कि आप कुछ करते रहिए, आप जुड़े रहिए लंबे समय तक, ठीक है। गिव ए कंप्लेन रॉन्ग वे है, कंप्लेन रजिस्टर होती है, कंप्लेन हमेशा रजिस्टर होती है मैम, गिव नहीं होती, ठीक है। कॉल नहीं गई, एक कंप्लेंट है, की है कंप्लेंट है, he gave me a call, he dropped me a call, कॉल वास्ते सही है, पर जो कंप्लेन कर जाने पुलिस थाने उत्थे आप रजिस्टर कराने, कंप्लेन रजिस्टर होती है, कि मैं रजिस्टर होती है, ठीक है। ड्रंकन वन डे हैवीली ड्रंकन सही है, दैट लेडी मिसिंग, वो कोई मर गई होनी है, बुढ़ी गवाच गई होनी है, ब्लैक मैन, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल फिर तुम यूज कर लिया, इतने तुम सिनोनिम्स पाना सी, बिट्रे
या डिसलॉयल या अनफेथफुल और या फिर होर कोई पा दे वर्ड, इन्ने वर्डों कोई पा दीजिए। ठीक है, डबल क्रॉस भी होंगे, डबल क्रॉस कर रहे। ठीक है, तो फिर उन्हें अगेन गिव ए कंप्लेंट, गिव नहीं आऊगा फिर रजिस्टर आऊगा। फिर अगर रजिस्टर नहीं होएगी तो सिंपली विस्ट है। सिंपली की अगर आप कंप्लेंट कराने वास्ते गए परंतु कंप्लेंट आपने रजिस्टर नहीं की पुलिस ने, तो फिर आप कह सकते वी विजिटेड द पुलिस स्टेशन, वी विजिटेड द पुलिस स्टेशन। विजिट की अपनी कंप्लेंट तो रजिस्टर हो ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होया कंप्लेंट का तो कोर्ट च नहीं जाऊगा, पर आप विजिट कर लिया, आप विजिट कर लिया, अपना कंसर्न की सीगा इन ऑर्डर टू जो भी काम करने वास्ते गए सी। ठीक है, इन ऑर्डर टू रजिस्टर कंप्लेंट। ठीक है, ट्रस्टेड वर्ड कोई गल नहीं, आप बाद च अपन वर्ड याद आया, ट्रस्ट की होंगे, ट्रस्ट होंगे। तो मर्डर बिट्रे, फिर बिट्रे, फिर बिट्रे नहीं आया, फिर मैगन आ गया, मैगन एंड स्कॉट आ गया, जो हम मैनू मैगन वो शायद वाइफ सी स्कॉट की, मैगन स्कॉट की वाइफ सी। तो फिर अगे तुम स्टोरी पढ़ी नहीं होनी, चल नहीं स्टोरी तुम पढ़ी होनी है, पर कल ना फिर भी प्रजेंटेशन वधिया सी। कोशिश आ करो कि इस स्टोरी, मैं कहा सर कहते होंगे सी कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ हड्डियां खड़ा करते, मांस सारा हटा दे शरीर चो, जिंदे रह जाओगे, फैट का हर टिश्यू कढ़ दे थोड़ी बॉडी चो, कला हड्डियां हड्डियां छड़ दिए, की छड़ दिए हड्डियां हड्डियां। कोई डॉक्टर एडा समझदार होवे, जिथे जिथे मास आए मास हटाइए, हड्डी एक भी ना ब्रेक होने दे, एक भी हड्डी ना ब्रेक होने दे, मास सारा हटा दे बॉडी चो, की बचूगा स्कैलेटन, की बचूगा स्कैलेटन बचूगा। तो फ्रेमवर्क एक स्कैलेटन है, तो जी इमेजीनेशन है वो फ्लैश है, वो की है फ्लैश। सर कहते कि स्कैलेटन फ्रेमवर्क स्कैलेटन है, तो इमेजीनेशन फ्लैश है, दोनों चीज़ां मिलकर शरीर बनाई, दोनों चीज़ मिलकर बॉडी बनाई है। तो राइटिंग की बॉडी वही है, तो स्पोकन वेरी बॉडी वही है, बॉडी चाहिए अपन कला स्कैलेटन नहीं चाहिए। आप स्कैलेटन सीख लेने, स्टाइल सिर्फ स्कैलेटन सिखाता, स्टाइल की सिखाता स्कैलेटन सिखाता। स्टाइल जो पढ़ोगे तुम बड़े बड़े जियोफ्री लीच पढ़ोगे, प्रोफेसर साहब पढ़ोगे कवाक साहब न, तो सिर्फ स्टाइल दसने की दसनी स्टाइल दसने, पर स्टाइल सिर्फ स्कैलेटन है, ये स्कैलेटन है। पैरा कितने खत्म होना चाहिए, कितने शुरू होना चाहिए, लाइन किमें बनती है, पैरे सिमुलेशन एक वड्डा सेंटेंस कौन सिंपल है जरूरी है, स्कैलेटन जरूरी है। मैं स्कैलेटन हटा दें फिर कुछ बचता नहीं, फिर भी कुछ नहीं बचता, जरूरी है। पर स्कैलेटन के नाल फ्लैश होनी चाहिए, फ्लैश इन्होंने नहीं सी, तो भी एक भी क्रिएटिव रचना लिख सके। इन्होंने बहुत कुछ लिखा रूल के बारे, हर स्टडी किया, स्टाइल के बारे लिखा है, लैंग्वेज किमें डेवलप हुई ये बारे हज़ार किताबां लिखिया हैं। तो विशेष करके मेरा टारगेट रहिंदे है जो इंस्पिरेशनल स्पीकर है, ये जिंदगी जिन्ना बनाते है, आएँ करो आएँ करो आएँ करो, खुद झूठ बोल के पैसा कमाया, खुद झूठ बोल के पैसा कहते थे आप झूठ बोल के पैसा कमाते, सारी जिंदगी झूठ से चली इन्हों की। पर लोगों को कहे कि थिंक इन ए बिग वे, थिंक इन ए बिग वे, थोड़ी उपलब्धि की थोड़ी उपलब्धि झूठ बोलना पिया, तुम तो ऑडियंस आके झूठ बोलते हो, सर तुम कर देगी इमेजिनेशन थोड़ी है। नेल्सन मंडेला है इंस्पिरेशनल फिगर, ये खुद बड़े है, इंस्पिरेशनल फिगर थोड़ी है। तो ठीक है आके बोलते थोड़ी जो तेजना आ जाती है कि हाँ यार आए मनी क्रिएट करिए, आए सर्जन करिए, आए करिए आए करिए, ठीक है थॉट्स है पर आप नहीं किया कुछ, आपने झूठ बोल के पैसा कमाया। तो आप आई कमियां सी कुछ, बाकी मैं कल थोड़ा एक्सप्लेन किया सीगा, एक 5-2 मिनट लूँगा बेटा, फिर आप क्लास शुरू करेंगे, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग है परटेनिंग टू टॉपिक। रिकॉर्डिंग ऑन है ऑफ है? ऑन है बेटा। तो बहुत सारे बच्चे इमेजिनेशन जिन्हें भी वो जो ऑथर है जोड़े वो जो स्पीकर है जोड़े कि प्रजेंट करते आपदे उन्होंने इंस्पिरेशनल फिगर मान लेंगे गे। मैं की नाम लवा जो स्पीच देंगे आके यार यूट्यूब पर बोलते है मोटिवेशनल स्पीकर। वास्तव देयर अचीवमेंट्स आर रियली नथिंग, they achieved nothing in their life, their entire lives revolves around fabricating those things which were denied, which were the talk of the past. We know each and everything। अगर तुम कंसनट्रेट करोगे मोटिवेशनल स्पीकर से थोनों सारी चीज़ें पता ही, थोनों सारी चीज़ें पता ही है, नवा कुछ होंदा ही नहीं उहदे च, पर we waste lot of time listening to them। The real figures are those who went through the suffering but they become tall, फिर भी वो टॉल होए, बहुत महान होए, और रियल फिगर्स है वो ये रियल फिगर्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड रियल फिगर्स देयर इज ए ह्यूज खैज़म बिटवीन दैम, उन्हां विच बहुत वड्डी खैज़म है, दरार है जी कभी नहीं भरी जा सकती। रियल जोड़े है रियल टॉल फिगर्स है, नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी है, रियल टॉल फिगर है जो चुके नहीं, आदर्श नाल समझौता नहीं किया, पर कुछ वो फिगर है बोलते आके बोली जाते किया कुछ नहीं होता। इस बहुत फर्क है। मोटिवेशनल स्पीकर लाइव बना लेंगे लोग, मोटिवेशनल स्पीकर लोग लाइव बना के बैठे बहुत सारे लोग,
तो उन्होंने सुनो तुम ध्यान ना सोचोगे तुम कहो क्या ही कुछ नवा जो बहुत ज़्यादा गहराई जाके तो 5 दिन सोचो एक मोटिवेशनल स्पीकर सुनो 5 दिन सोचो जैसी की सीखा तो कुछ नहीं होता निटी ग्रिटी नथिंग उद्वेग है एकदम फड़फड़ाने लग पैंदे ऐ कर देंगे पर रियलिटी नेक्स्ट डे you leap into the reality and reality is starkly different from those narrated by the motivational speaker जिन motivational speaker ने किसी reality ने कोई लेना देना ही नहीं का that's why their efforts fail to produce the economy boost the national growth they have been denied through scientific research and the neurological theories really say certain things that it is impossible to make the change through a motivational speaker नहीं कर सकता change but they are earning billion and we are attending their seminars we are thinking that we will become really great listening to them only ਅਸੀਂ ਅੱਡੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਹੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕੁਛ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗਲਤ ਹੈ कुछ भी नहीं अंदर आई अप्लाई बहुत है I can rate enormous there is a huge crowd of those people who really think that they are going to change the course of the universe but nothing is going to change the science as far as the science is concerned it is heavily dependent on few cerebral 100% are doing a lot in neuroscience only 100% in this world are doing a great thing in improving the quality of artificial intelligence but out of 700 crore people they are 100 they are doing everything within their permissible limit and they are really working hard they are not sleeping they are not doing any work anything beside work सब कुछ कर रहे वर्क कर रहे पर है सोई खड़े उत्थे सोई है उदों बाद 101 बंदा नहीं होता उन्हें एक मर जाता है फिर एक आ जाता है हज़ारां यूनिवर्सिटियां एक बंदा फिर निकल के आ जाता है फिर वो मर जाता है एक अद्धा फिर एक आ जाता है रहिंदे सोई बस चेंज वही कर रहे हैं बाकी सब मेरे वर्गे मोटिवेशन स्पीकर को ले जाते हैं संदीप महेश्वरी है कुछ भी है ठीक है तो उदों बाद लेट्स कम टू टॉपिक रिटर्न टू टॉपिक द टुडेज टॉपिक वाज on books it was journal topic if somebody gives you the topic books is a journal topic you can illustrate each and every point pertaining to those aspects which comes close to the books which brings the humans towards books why we are fascinated towards books what is the difference between an educated person and an illiterate person what is the difference between an educated and illiterate person so each and everything can be culminated within that topic you can choose as many example as you want you are free to meander because the topic is a general one but if the topic is there that you have to speak the book you read yesterday yeah you read in your childhood then you have to become specific you can't take the examples from other books it's impossible for you to meander that long but today's topic we are keeping the topic general one because if the general topics are there you can speak we can work on specific topics because specific topics requires a lot more hard work compared to the general topics में बहुत ज़्यादा meandering अवेलेबल है आपके पास में पर स्पेसिफिक में नहीं आती we are talking since the arrival of a man on this universe the need of reading the need of learning was really immense we want to learn each and every aspect which was unknown to us unknown to the humankind and our search for gaining the knowledge of those aspects which are beyond our knowledge is immense जो हमारी नॉलेज से बाहर के विषय हैं वो इमेंस है दैट्स द थिंग विच ब्रॉट अस विच ड्रैग्ड अस विच रियली शव्ड अस टू बुक्स जिन्होंने अपनी बुक दी और धकेलता दे वर्क एज इट वर्क एज एन मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम किया नहीं it acted as a magnetic field है between the knowledge the books possess and our unknowing
द फैक्ट्स। एक फैक्ट है जो आपको खिंचता है बुक्स दे, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको लैक ऑफ नॉलेज है, दैट रियली एक्ट एज एन मैग्नेटिक फील्ड विच रियली पुल्स अस towards the books. And this sailing, the sailing, yeah, this sailing has become a permanent aspect of our existence. ये सील हो चुके हैं, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, सील हो चुके हैं। We yearn for books, ਸਾਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਵਾਸਤੇ। We can even die for books, books ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। There is nothing if we don't gain, we want to gain each and everything, and books are the only source which can provide us with the knowledge. Books is a source provide kar sakta hai. Internet media has failed to propagate those aspects and making them established within the minds. Even if the environmentalists are saying that crores of tons of woods every year is wasted on paper, but not a single person is listening to them. Amazon Kindle has failed. Each and every aspect, each and every technologically aspects has failed. No, nothing can compete with books. We are still yearning for paperbacks. In my Kindle there are 30 books, but in my library there are 2000 books. It proves that we are really meant for books. We can't waste our time on the electronic media. If we compare the electronic media with the real books importance is really huge. That's why we are still ready to remove a concrete jungle for the publication of the book, because we have learned before the publication of books that 7 billion years of human history produced nothing. Only they were able to make how to lit fire and the wheel. Two inventions were there, but search only to go back 200 years and you will come across those huge discoveries, huge immense field of science, IT, medical, everything gets revolutionized within 200 years. And when Hitler said that if a man from the past 80 years is born again, he will be mystified that he even doesn't know a knowledge, a skill of a 15 years old kid. He can't understand what the kid is doing. He hasn't seen the mobile, television, airplane, nothing. But today we are enjoying them. But if we go further back, is there anything to be said? Nothing is there. We lived in caves for 7 billion years. If there were no books, still for 7 billion years, we are residing in jungle. Maybe 70 billion years. And our ancestors has taught us those aspects of life which are for survival. जो हमने पूर्व सीखा है, the things are for survival, not for knowledge. Knowledge नहीं होना कुछ भी. We get the knowledge through books. Knowledge वास्ते अपन books जाना पैंदा है.